Let's have cucumber. Okay. How's this? How is this? Hello everybody and welcome back to my channel. How you all doing? Well, today's video is all about BLW, that is baby-led weaning. Well, in this video, I just want to share my journey with our experience with baby-led weaning. मैं कोई आपको इम्पोज नहीं कर रही या मैं आपको कुछ स्पेशली ये नहीं बोल रही हूँ कि इस मेथड को फॉलो कीजिए. वट एवर दैट यू फील लाइक डूइंग, हाउ एवर यू वॉन्ट टू रेज योर बेबी, इट्स अप टू यू. But I'm just sharing here my experience that how we started with baby-led weaning and what all problems we had to face while doing this. So Elia, should we tell them? I guess it's time we should tell them, right? Actually, I got a lot of DMs on Instagram where people were asking me that how I actually introduced solids to Elia. So I thought, why not make a video on it? So without wasting much time, let's get started. You guys have heard me talking about baby-led weaning in my previous videos. मैंने हमेशा ही baby-led weaning के बारे में बात किया है. But the first question is, what is baby-led weaning? Well, very simple. Traditionally, हम babies को solids introduce करते हैं in the form of purees and mashed foods. But in baby-led weaning, we actually introduce finger foods to baby. But most importantly, we encourage self-feeding. Yes, you heard me right. हम babies को खुद से ही खाने को encourage करते हैं. I know, सोच के ऐसा लगता है these teeny tiny babies with their small fingers, how will they be able to feed themselves? इतने छोटे बच्चे अब आपको कैसे खाना खिला सकते हैं? But I will tell you, इनके size पे मत जाओ. They are like small scientists. They love to explore, investigate, and test everything what is around them. So for them, it is very easy to learn this process. If you don't believe me, I will tell you how. Day 1, I was at a different level altogether. और जो अभी 1 month के बाद जो मैं देख रही हूँ इलाया को करते हुए, there is a lot of success at it. I'm not saying that she's completely eating her own food, but as you will see in our video how she eats food, you will get a certain idea that you know where we have reached. What happened, Baba? So Ilaya, hi, baby, baby. What do you feel like having for lunch? What should we have? Guys, is this just me or this also happens with you? Like, whenever I have to decide for the meals, like I have to do meal planning, it's a big task for me. But thank God I don't have to do this separately for Elia because we eat the same food. No. हम purees और mashed food नहीं खाते, हम proper खाना खाते हैं. And today for the lunch we will have, what will we have? We will have paneer ki bhurji and roti and curry. You want to have that? But before that, let's get her prepped. जल्दी से इलाया को बिप बनाते हैं और हाई चाय पे लेके चलते हैं. So excited to eat the food, right? Yay! So let's wear the bib, Ilaya. Ilaya, here, baby. Every time whenever I make her wear this bib, she gets a cue. Yes, it's a time to eat. Like she gets super excited and she cannot wait. Okay, let's go. Let's sit here. So what I'll do is I will cut the roti into long wide strips, which will be very easy for Elia to hold on. Yeah, baby, just a minute. Roti. So the roti is pretty much long, बहुत long है और 2 inches wide है, which is perfect for her to grab on. Right now, putting paneer on top of a roti. Bon appetit, Elia. How's your roti? Do you like the paneer? It's good, no? Here you go. Good girl. Are you done? What do you want? Kishi? Peach? What? Hi, baby. Okay, let's get you off. Okay, so the first thing first, I would like to tell you कि how did I get to know about this process? कि मुझे baby-led weaning के बारे में कैसे पता चला? Okay, just a minute. Actually, when we were close to the 5-month mark, तो हमारा regular checkup था इलाया के pediatrician के साथ, and उन्होंने मुझे एक meal plan दिया जिसमें बहुत कुछ mention था that I should start with दाल का पानी,
I know, and lots of other things such as purees and mashed foods. So that was the time when it occurred to me ki, oh my god, it's finally a transition from milk to solids, and I have to start, thinking about what to feed her, how to feed her. I was so confused. I can't even tell you, as a new mom, I had my own concerns. मेरे को वैसे ही नॉर्मल मील प्लानिंग में इतना ज़्यादा टास्क लगता है कि मुझे लगा ओ माई गॉड हाउ विल आई डू दैट. बट दिस इज़ जस्ट मी. आई नो सारी मॉम्स ऐसी नहीं होती, बट दिस इज़ जस्ट मी. बट वॉट हैपन आफ्टर वॉज कि मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की. I started, reading about a lot of things like baby nutrition, what we should give, what kind of food we should give to the baby in the first year, कौन से food नहीं देने चाहिए. Like internet पे तो इतना सारा information है that sometimes you get confused. But thank God, finally I stumbled across on this page on the internet by the name of Feeding Littles. Thank God मुझे ये पेज मिला. I mean इसमें प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है बेबी लेड वीनिंग के बारे में. आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड व्हाट आर द साइंस दैट यू हैव टू सी इफ योर बेबी इज एक्चुअली रेडी फॉर बेबी लेड वीनिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो साइमल्टेनियसली मैंने ये वेबसाइट से प्रॉपर कोर्स भी किया. येस, इनके पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मील प्लान्स अवेलेबल हैं. So I also did, and for which I had to pay $4,500. See guys, I just want to tell you that these websites are not Indian. तो जो information आपको मिलती है actually is according to outside meal plans. हमारे Indian meal के हिसाब से नहीं है. But you get your basics right. आपको clarity हो जाती है कि food को कैसे prep करना है before you introduce to the baby. Like that is the very important point for baby led weaning. And it's not a rocket science, it's very easy. So if you want to try, do check out these websites, Feeding Littles and Starting Solids. So I thought that why not give this method a try. Means क्या harm है, try करने में कुछ नहीं जाता है, and it's just the start. If it will not work out for me, I will switch to the traditional way of feeding purees, but let me just give it a try. I would like to tell you guys कि before starting with this method, I had a lot of questions in my mind before, which I would like to tell you, and I would also like to tell you my version what I feel now after doing baby led weaning for a month. So दोनों बहुत ही contradicting है, but आपको बहुत ही मजा आएगा सुनने में. First of all, मेरा बहुत ही obvious question ये था, babies के पास तो teeth नहीं होते हैं, so how will they eat the food? That's pretty obvious, right? How will they chew the food? What's the big idea? Babies actually don't need teeth. Yes, they don't need teeth to chew their food. वो उनके gums जो होते हैं वो बहुत ही strong होते हैं and they can easily eat their food. Like you don't have to wait कि वो 1 year old हो जाए and then you will start giving them proper food. I am not kidding there. You can actually start right now. Second question what I had in my mind was, well, self-feeding के through, can baby fill their own tummies? Like whatever that goes in the mouth will be very less. Will that be sufficient enough? So let me clear your doubt also, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से clarity हो गई after doing a lot of research about this topic, कि for first year the main source of nutrition for baby is actually the breast milk or the formula feed. So you don't have to worry about whatever that baby is doing with the food right now. I know it is almost like an experiment. Like ऐसा लगता है कि baby सिर्फ is playing with the food and throwing the food on the floor. But trust me guys, वो आपको खुद ही पता लग जाएगा. Eventually with time, baby will also start eating the food properly because you will see the empty plates. No, the food is not gonna be on the floor but in their bellies. Trust me on this. जैसे कि ये method, I've been doing this from last 1 month. What I have realized is कि बेबी लेड वीनिंग करने की पॉजिटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव्स, विच आई विल ऑल्सो लेट यू नो. बट स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव्स, फर्स्ट इज that it actually fosters independence. Babies learn to eat their food independently. पेरेंट्स या किसी भी केयर गिवर को स्पून फीड कराने की ज़रूरत नहीं होती, विच आई थिंक इज़ अ परफेक्ट थिंग. सी इवेंचुअली भी तो आप अपने बच्चों को यही सिखाओगे ना कि वो खुद से ही खाना खाएं. सो वाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. वाई डू आई से दिस? बिकॉज आई डोंट नो, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, लाइक फ्रॉम माई फैमिली साइड, फ्रॉम माई फ्रेंड साइड, लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. हाउ डू दे फीड देयर बेबीज?
उनके पीछे भागना पड़ता है घंटों घंटों तक. They have to make, they have to do all the dramas, like they put on TV and they put on I don't know what not things to distract them. So this is exactly what I didn't wanted to do with Ilaya. इसीलिए मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा बेटर लग रही थी and it made sense to me. My most favorite reason for baby-led weaning is that you actually give variety of food to your baby in terms of textures and taste. Like जो आप खा रहे हो आप exactly वही food अपने बेबी को देते हो. मेरे कहने का ये मतलब है कि आप बेबीज को प्यूरीज और मैश फूड्स नहीं दे रहे हो, क्योंकि जनरली उस टेक्सचर के फूड का टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है. कभी आपने टेस्ट करके देखा, लाइक आई हैव व्हेन आई वाज गिविंग इलाया मैश फूड्स, व्हेन आई टेस्टेड द थिंग इट वाज सो ग्रोस, लाइक आई कांट इवन टेल यू. मुझे इमेजिन नहीं हुआ कि वो बेबी को कैसा लगेगा. जो आप खाते हो आप वही अपने बेबी को देते हो. इससे दो चीज़ें होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी लर्न टू अडेप्ट ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टार्ट. तो उसे पिकी ईटिंग नहीं होती है, एज इन यू मस्ट हैव सीन इन ओल्डर बेबीज एंड टॉडलर्स कि बच्चे कुछ चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, लाइक दे आर नॉट फोन्ड ऑफ सर्टन स्टफ बिकॉज दे डोंट हैव दैट टेस्ट फॉर द फूड. एंड सेकेंड जो बहुत अच्छी चीज़ होती है, दैट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एलर्जीज इन फ्यूचर्स ऑल्सो डिक्रीज. लाइक बहुत सारे एडल्ट्स को पीनट एलर्जी होती है, एग से एलर्जी होती है. वो इसीलिए होता है बिकॉज हम बहुत ही लेट इंट्रोड्यूस करते हैं ये सब फूड टू द बेबी. सो इफ़ यू गिव दीज फूड अर्ली, the chances are also less for any kind of allergies in future. Of course there's a proper way कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ये फूड्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप सब कुछ दे सकते हैं. देयर आर पर्टिकुलर रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. And talking about the negatives for this process is that it is a little bit of a messy affair. Like whenever you're doing this with your baby, mess is inevitable. Mess होगा ही और आपको ही क्लीन करना है. सिर्फ आपको बेबी नहीं क्लीन करना है प्रॉपरली, आपको हाई चेयर, आपको फ्लोर, आपको सारा एरिया क्लीन करना पड़ेगा जहाँ जहाँ फूड जाएगा. बट मेरे हिसाब से ये जो नेगेटिव पॉइंट है ऑफ दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्मॉल. फॉर मी दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल. मुझे सिर्फ अभी फॉर द टाइम बिंग मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं बस इलाया को खाना खिलाऊँ एंड हर टमी शुड बी फुल. दैट इज़ taken care of with the milk. Like my intention is for the long term. मैं चाहती हूँ कि इलाया खुद से खाना खाना सीखे. उसके लिए अफेयर बहुत ही ज़्यादा फन और हैप्पी होना चाहिए, जैसे कि हम फील करते हैं when we see food, हाउ फील गुड फैक्टर आता है एक. सो आई वॉन्ट एग्जैक्टली द सेम फॉर माई डॉटर ऑल्सो. So this is what I've always thought. Sometimes yes, I do have situations where I feel that it is very tough. It requires a lot of patience and a lot of hard work, I tell you. But I think it is all worth it at the end when you see finally your baby starts eating. उससे ज़्यादा बड़ी satisfaction और किसी चीज़ में नहीं मिलती है. That's the perfect thing. And guys, I would specially like to mention this to everyone that before you start thinking of doing this process, it will be very intelligent on your part to educate all the members of your family. आप सबको ही इस process के बारे में बताएं कि how to do this, what are the pros and what are the cons, so that they are pretty much aware of this thing and वो आपकी intentions को भी समझ पाएंगे, or else it becomes a very difficult job. Like when I started with this and still I am kind of struggling. I am in the middle. मुझे हर रोज समझाना पड़ता है. I don't know, but this is what it's happening with me. So if you can get everyone on board in doing this with you, ये process और easy हो जाता है, because sometimes we also, like as moms also, we question our ways कि हम कोई चीज़ सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो वो ऑब्वियसली बेटर होता है. सो व्हाई नॉट टेक एवरीवन ऑन बोर्ड विद अस एंड मेक दिस ईटिंग जर्नी अ गुड वन. Okay. So guys, I would also like to share one of my experience. Like one time what happened, Ilaya was eating carrot. Do you remember Ilaya? One day she was trying on the carrot, and what did she do was she started gagging. Now I'll tell you what is the difference between gagging and choking actually.
but she started coughing a lot, and because मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, I got scared. और वो पैनिक मोड में मैंने फटाफट लाया को उसकी हाई चेयर से निकाला, and I started patting on her back like really hard. I got scared, like even she was crying. But later I realized that that was not choking, it was gagging. Gagging actually एक natural protective reflex है जो babies करते हैं. Like कोई भी foreign पार्टिकल या कोई भी फॉरेन चीज़ बेबीज के मुंह में जाती है तो वो फटाफट उसको बाहर स्पिट आउट करते हैं कफ करके. इट बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्शन दैट हैपेंस इन द थ्रोट. सो बेबीज खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करके स्पिट आउट करते हैं फूड. सो दैट इज गैगिंग. गैगिंग जब होती है बेबीज ऑल्सो क्राई, दे कफ, दे बिकम रेड. दैट्स ऑल अबाउट इज गैगिंग. See, when choking happens, baby turn blue. There is no noise, sadly. कोई आवाज़ नहीं होती. It is always silent. Baby is not able to breathe also. So what to do when babies actually choke? I hope not. But अगर babies को choking हो तो क्या करना चाहिए? Parents को first of all first aid आना चाहिए. For that you can either take a course या आप कोई YouTube tutorial देख सकते हैं. बहुत सारे अवेलेबल हैं from trusted sources. You should learn how to do some basic things when baby is choking. And mind you guys, babies can choke on anything. ठीक है, सिर्फ खाना नहीं है या बेबी लेड वीनिंग से ही नहीं चोकिंग होती है. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टडीज विच सजेस्ट दैट बेसिकली बेबीज को प्यूरीज और मैश फूड खाने से ज़्यादा चोकिंग होती है बिकॉज दे हैव नो कंट्रोल ओवर द फूड. द अदर पर्सन इज फीडिंग देम, तो हमें आइडिया नहीं होता है कितना फूड अंदर जा रहा है. बेबीज कैन ऑल्सो चोक ऑन डिफरेंट toys that they're playing with या घर की कोई भी items. So parents should know first aid beforehand to avoid unforeseen circumstances. Right? Shoo! Am I making sense? Elia, am I making sense? No, you're sleepy. Don't tell me you're sleepy. Hello? Hello? Okay. So what are the do's for baby-led weaning? अगर आपको लगता है आप ट्राई करना चाहते हो baby-led weaning तो आपको क्या करना चाहिए? First thing that you should always take care is to create a focused environment for your child. Like you should try to keep distractions away from the room as much as possible. Like TV mat use karo, don't use your phone or random things, so the baby doesn't get distracted. Enjoy this process and love the food so that baby loves the art of eating. She likes all the weird stuff. She won't let me film, but my idea is कि आज मुझे ये पक्का ही वीडियो बनानी है चाहे इलाया मुझे कितना भी काम ना करने दे. But I will make sure that I make this video. I just want to tell you, you can start with basic things. You don't need to have very big fancy items. Simply पहले आपको अपने आप को prepare करना है and then you have to prepare your baby after. Like baby को prepare करना फिर easy है, but to prepare yourself that requires job. फिर से करें 1 2 G. So the second thing is that you should definitely check out my last video that I uploaded. It was about the basics or the essentials for a 6-month-old baby. उसमें you will find out all stuff that you need to buy before you can start with baby-led weaning. ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी वही चीज़ें you have to buy. You can see whatever according to your intelligence. But I've just given but I've just listed down few items that you should definitely. Elia. बट एटलीस्ट उस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टाइप की चीज़ें चाहिए. एंड विद योर इंटेलिजेंस यू कैन बाय योर ओन थिंग्स, राइट? ओके, सो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इन बेबी लेड वीनिंग इज आपको अपने हाथ से बेबी को नहीं खिलाना है. बेबी को खुद से खाने देना है विद द टीनी टाइनी लिटिल फिंगर्स. आई नो इट्स गोना बी टफ. लाइक मेरे पास भी बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पर मुझे ऐसा लगा है कि गॉड इलाया स्ट्रगलिंग, वो खा नहीं पा रही है, थोड़ा सा बाइट उसके मुंह में डाल देती हूँ, समथिंग विल गो इन अ माउथ. बट देन दैट इज़ वेरी रिस्की. उससे चोकिंग हो सकता है. लेट बेबी सेल्फ फीड, you will get there. Don't worry, baby खाने लग जाएगा. Don't worry. In case you feel that baby is gagging,
या बेबी के मुंह में कुछ बड़ा पीस है, you have to never put your finger in their mouth. That is very risky. Never do that. Avoid it. I will tell you, babies अपने आप से ही bigger pieces spit out कर देते हैं, so don't worry. Just don't be scared when gagging happens. You have to keep yourself calm and just you have to relax. I know I'm sounding crazy, but you have no other option. You just have to be calm and just be, you just have to stay calm. And in case agar choking happens, you're already prepared like what to do. So that's a good thing, right? The most important thing is how to prep the food. खाना कैसे देना चाहिए बेबी को in baby-led weaning. You have to see, there is one rule of thumb. जो भी खाना देते हो, it has to be very soft. चाहे आप उसे cook करो, saute करो, steam करो. I started with steaming. Food इतना soft होना चाहिए कि वो easily mash हो जाए with 2 fingers. इलाया को मैंने फर्स्ट टाइम बनाना दिया था. आई गेव हर एवोकाडो विच इज़ नेचुरली बहुत ही सॉफ्ट होता है इन नेचर विद द कंसिस्टेंसी, सो वी हैड नो प्रॉब्लम. बट ओके, कंसिस्टेंसी का तो हो गया, बट वॉट अबाउट द साइज? Big size is always a safe size. For example, the food has to be as thick like as 2 fingers put together, like 2 inches wide होना चाहिए और fingers जितना long होना चाहिए, उससे भी बड़ा, और it is perfect. Like if you're non-vegetarian, आप पूरा एक chicken drumstick दे सकते हो बेबी को, like a 6-month-old बेबी को आप पूरा chicken drumstick दे सकते हो. Baby will not be able to choke on a 2-inch wide long stick of carrot, लेकिन बहुत ही perfect size कि चीज के क्यूब से बेबी को चोकिंग हो सकती है. तो फिर बड़ा साइज दो बेबी को. गिव बिग साइज, गिव बिग साइज फूड टू द बेबी. यस, नोना, हाँ, आरू. Baby doesn't eat well in the start. Please don't exert any kind of pressure. All the babies are not same. अभी भी मैं आपको इलाया की अगर बात बताऊं, इलाया प्रॉपर पूरा खाना नहीं खाती है to fill her tummy, but she has started picking the food so properly, and she started क्या करे? Okay, it's time for a nap. I'll be back in a minute. Not in a minute, but after an hour. And ma'am, your cocktail is ready. What you would like to have? Your mocktail is ready, not the cocktail. So guys, something about our background. So before giving foods to Ilaya, मैंने इलाया को actually उसकी हाई चेयर से comfortable कराया. मैंने पहले ही उसकी हाई चेयर ऑर्डर कर दी थी. So on a high chair मैं उसको उसके teether, toys, spoon, glass, ये सब चीज़ें देती थी, so that she gets comfortable and used to the kind of environment that she will see on our table. So the first food that I gave to Ilaya was banana, and rest of the foods you will see in the video. I hope you will enjoy. Baby, here. Okay, with the right hand if you want to. Good girl. This is just perfect. Mommy's happy. Ilaya's happy? Oh, easy. It's okay, she'll figure out.
Well, this was all about in today's video. Hope you enjoyed it. Guys, it's a request. If you like the video, do like and don't forget to subscribe. I will see you next week. But till that time, stay safe, stay protected, and lots of love to you. Mwah.